Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do short questions of unit number 2 class 9th Hubbul Watni patriotism. And first of all we will do our short questions in the text. Unit के अंदर जो short questions हैं हम उनको solve करते हैं. The first question is who offers sacrifice for the country? Who offers sacrifice? कौन देता है कुर्बानी for the country? मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है? A patriot loves his country very much. He is willing to offer sacrifice when the need arises. We have examples from history to show that the patriots give sacrifice for their motherland. A patriot loves his country. एक मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है very much, बहुत ज़्यादा, and is willing और ख्वाहिश रखता है, तैयार होता है to offer sacrifice, कुर्बानी देने के लिए when the need arises, जब ज़रूरत पड़ती है. We have examples, हमारे पास मिसालें हैं from history, तारीख से, to show that, ये दिखाने के लिए, ये ज़ाहिर करने के लिए that the patriots की जो मुहिब वतन है give sacrifice for their motherland, वो अपने मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं. Question number 2. Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Who led, किसने रहनुमाई की the Muslims of the subcontinent, बरसगीर के मुसलमानों की, in their struggle, उनकी जद्दोजहद में for a separate homeland, एक अलहदा मादरे वतन के लिए, यानी एक अलहदा मादरे वतन की जद्दोजहद, बरसगीर के मुसलमानों की एक अलहदा मादरे वतन की जद्दोजहद में मुसलमानों की रहनुमाई किसने की? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. His aim was to protect the values, culture, traditions of the Muslims and give them the sense of identity. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रहनुमाई की द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की, इन देयर स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद में, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन की जद्दोजहद में. हिज एम वॉज, आपका मकसद था, टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, के हिफाजत करें इक़दार की, कदरों की, कल्चर, सकाफ़त की या तहज़ीब की, एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की, एंड गिव दैम द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उन्हें पहचान, शनाख्त का एहसास दें, पहचान का एहसास दें. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ कौन सा है? निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ गिवन टू द ग्रेट मार्टायर्स who have shown great courage and bravery for their motherland. It is a way to acknowledge and honor their sacrifices for the country. निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है. इट इज़ गिवन टू द ग्रेट मार्टर्स, ये अजीम मुहिब वतनों को, शहदा को दिया जाता है. हु हैव शोन ग्रेट करेज, जो अजीम जो है हौसला या जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, एंड ब्रेवरी और बहादरी का, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए. इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, टू एक्नॉलेज, सराहने का, अकीदत, खराज अकीदत पेश करने का, एंड ऑनर और इज़्ज़त देने का, देयर सेक्रीफाइसेस, उनकी कुर्बानियों को, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियों को. Next we come to short questions in the exercise, and the first question is, how will you define patriotism? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करेंगे? आप हुब्बुल वतनी के कैसे डिफ़ाइन करेंगे? Patriotism or patriot are the words originated from the Latin word patriota, which means countryman. So patriot means the lover of the country, and patriotism means the love for one's country or devotion to मदरलैंड. पेट्रियटिज़म और पैट्रियट के, पेट्रियटिज़म या पैट्रियट आर द वर्ड्स, ऐसे अल्फाज हैं, ओरिजिनेटेड फ्राम अ लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, जो एक लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से लिए गए हैं, पैट्रियोटा से माखूज़ हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्री मैन, मुल्क का शहरी, मुल्क का बाशिंदा, या हम वतन भी कह सकते हैं. सो पैट्रियोट मीन्स, इसलिए पैट्रियोट का या मुहिब वतन का मतलब है द लवर ऑफ द कंट्री, मुल्क से मोहब्बत करने वाला. एंड पैट्रियोटिज़म मीन्स, और हुब्बुल वतनी या पैट्रियोटिज़म का मतलब है द लव फॉर वंस कंट्री, किसी के अपने मुल्क से मोहब्बत, और डिवोशन टू मदरलैंड, या उसका अपने वतन से लगाव, लगन. क्वेश्चन नंबर 2. What are the qualities of a patriot? एक मुहिब वतन की खसूसियात क्या होती हैं, खूबियाँ क्या हैं? A patriot has great love for his motherland. एक मुहिब वतन अपने मादरे वतन से बहुत मोहब्बत करता है, and he is ready to give any sacrifice for his country.
वो अपने मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है. फॉर him, उसके लिए, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. A patriot has a great love for his motherland. एक मुहिब वतन अपने मादरे वतन के लिए अजीम या बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है. He is ready to give any sacrifice, वो तैयार होता है कोई भी कुर्बानी देने के लिए. For his country, अपने मुल्क के लिए. For him, उसके लिए, the sovereignty, integrity and honor of the country, के मुल्क की sovereignty, हाकमियत, integrity, सालमियत and honor और इज़्ज़त are supreme values, आला तरीन कदरें हैं, on which no compromise can be made, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. Question number 3. As a citizen or lover of Pakistan, what are your duties towards your country? کہ پاکستان کے شہری یا پاکستان سے محبت کرنے والے کے طور پر آپ کے ملک کے لیے کیا فرائض ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں. ایز اے سٹیزن آف اینڈ لور آف پاکستان, کہ پاکستان کے شہری اور محبت کرنے والے کے طور پر, وی ہیو مینی ڈیوٹیز ٹورڈز آور کنٹری, کہ ہمارے بہت سے فرائض ہیں ہمارے ملک کے لیے. وی شوڈ لو آور کنٹری, ہمیں محبت کرنی چاہیے اپنے ملک سے. وی شوڈ فالو دا رولز آف آور کنٹری, ہمیں اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے. وی شوڈ بی آنیسٹ, سیکریفائسنگ اور ہارڈ ورکنگ اینڈ ٹروتھفل, کہ ہمیں ایماندار, قربانی دینے والے, سخت محنت کرنے والے اور راست باز یا راست گو ہونا چاہیے. دا ساورینٹی, انٹیگریٹی اور آنر آف دا کنٹری شوڈ بی دا سپریم ویلیوز فار اس, کہ ملک کی حاکمیت, سالمیت اور عزت ہمارے لیے اعلیٰ ترین قدریں ہونی چاہیے, اعلیٰ اقدار ہونی چاہیے. Question number 4. What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں غیر ملکی حملے کی صورت میں ہوشیار رکھتی ہے, خبردار رکھتی ہے. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Because of patriotism, the sovereignty, integrity and honor of the country become supreme values on which no compromise can be made. The spirit of patriotism, حب الوطنی کا جذبہ, makes us stay alert, ہمیں ہوشیار رکھتا ہے, خبردار رکھتا ہے, in the wake of foreign invasion, غیر ملکی حملے کی صورت میں. بیکاز آف پیٹریوٹزم, کہ حب الوطنی کے جذبے کی وجہ سے. دا ساورینٹی, انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری, کہ ملک کی حاکمیت, سالمیت اور عزت بیکم سپریم ویلیوز, اعلیٰ ترین قدریں بن جاتی ہیں. آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ, جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. کویسچن نمبر 5. How will you elaborate Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's quote? We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and a strong nation. How will you elaborate, کہ آپ وضاحت کیسے کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس جو ہے معقولہ یا کہی ہوئی بات کی. We must develop a sense of patriotism, کہ ہمیں لازمی حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا ہے. which galvanizes us all, جو ہم سب کو متحرک کرتا ہے. into one united and strong nation, ایک متحد اور مضبوط قوم کی شکل میں. It means, اس کا مطلب ہے, بیکاز آف پیٹریوٹزم, حب الوطنی کی وجہ سے, حب الوطنی کے جذبے کی وجہ سے. دا ساورینٹی, انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری بیکم سپریم ویلیوز, کہ ملک کی حاکمیت, سالمیت اور عزت وہ اعلیٰ ترین قدریں بن جاتی ہیں. آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ, جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. دا ہول نیشن بیکمز یونائٹیڈ اینڈ اے کمپیکٹ ہول, کہ پوری جو قوم ہے وہ متحد اور یکجان ہو جاتی ہے, ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے, ایک جان دو قالب کی طرح. سو دا نیشن پیوز اٹس وے ٹورڈز پروگریس اینڈ گرینڈیئر, اور اس لیے جو قوم ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ ترقی اور عظمت کی طرف متعین کرتی ہے, یا اپنی ترقی اور عظمت کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے. دیٹس آل, تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.